I love the place. Yeah. It has the vibe, you know. The vibe, you know. Yeah. So we're looking for someone जो कि हमारे विजन के साथ रिस्क ले सके जी। और क्योंकि our next project is very ambitious. It's called Roots Up. And Fruits Down. And on that note, let's take a selfie. Please, why not? So why don't you have a look at what we did a year ago in Spain? Sure. So this was 7 countries of Europe together in one art form. Brilliant! And हमारे पास था ही क्या उस वक्त? One simple design and we used what 7 to 8 local faces for this beautiful installation. Oh, we thought of something special for Enzo as well. We bring in a real tree and we hang it upside down. As in roots up and fruits down. And there'll be 3 acrobats who'll be hung for around 15 minutes and they'll perform their best stunts. और एग्जीबिशन के बाद हम पेड़ के साथ क्या करेंगे? फेंक देंगे? Absolutely. Great. Seriously, man. This is roots up and fruits down, guys. Excuse me. Thanks. Hey, wait for me. डा, इनका ऐसा पर सर डाउन तो नहीं है क्या? Really think so. On that note, let's take a selfie. Hey sis. Hey. ये Thank God. यही चाहिए थी मुझे. कैसा चल रहा है? तेरे ही शब्दों में फटी हुई है. अरे आज का बाबा का ज्ञान वीडियो देखा? मैं दिखाता हूँ. Show me. अच्छा. You have to see. तुम शून्य हो। तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस शून्य है। हम सब शून्य हैं और जुड़े हुए हैं उस बड़ी शक्ति से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिस, टेंशन मत ले. तुम शून्य हो. नहीं, तुम शून्य हो. So, तुम्हारी ये कॉलेज गर्ल वाली स्माइल क्यों फूट रही है? Get out. Welcome to my world, sis. He's so cheesy. Was he always this cheesy? Exactly. Fuck, seriously? रोशन सर, 2 मिनट बच्चों से बात करनी है. Anyways, they're scrolling on their phones. Go for it, man. Thank you. Hi guys. Okay, so the jerseys are here. This is what it looks like. What do you guys think? Nice. Okay, so class के बाद आके मुझसे ले लेना, ठीक है? और यार थोड़ा फोन पे कम रहो ना. Don't trouble him so much. All right. Thank you, sir. Thank you, brother. Hey, let's go get it. हाँ, you है. बाद में ले लूँगी. Okay. I have to collect the jersey at his house क्योंकि मैं कॉलेज में collect करना भूल जाऊँगी. Get it?
आज भी लगा हुआ है। भैया जरा चेक करना, मैंने एक और लोकेशन ऐड किया है। मैडम, only 10 minutes waiting. हाँ हाँ ठीक है। Hi. Hi. Have a seat. Thanks. Welcome. So, So, I'm glad we decided to meet. you are? हर मुलाकात सेक्स में एंड नहीं होती है। If not for work. But this, as per our last conversation, is just a date. No sex wala date. Yeah, how drunk was I when I suggested that? I don't know. We should first get our drinks to get drunk here, I guess. We should. Excuse me? Excuse me? बस बस इधर ही। 2 मिनट। Okay, ma'am. वसुधा, ओह, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा घर का काम कर रहा था। जस्ट 2 minutes. Come. Sorry about that. What are you doing? Huh? I thought we... Ew, no! What the hell is wrong with you? हाँ? 1 हफ्ते से मुझे ऐसे वाले फोटोज भेज रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें रिप्लाई भी नहीं किया, फिर भी भेज रहे हो। अच्छी नहीं लगी? Dick pics are gross, dude. ये सारी मेरी नहीं थी। What? Yes. ओह, मतलब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। पर भेजे क्यों? I'm sorry, Vasudha. Actually, I just got divorced after 10 years marriage. ये सब apps, swipes, सब नया है मेरे लिए. I mean, all these things are new to me. So these young guys from my firm told me to do that. Wow. और वैसे भी ये dating in midlife काफी confusing है मेरे लिए. लेकिन मैंने तो स्वाइप तुम्हारी शक्ल देख के की ना। अच्छा खासा तो फेस है। लीड विद दैट। Sorry, Vasudha. मुझे लगा आजकल dating ऐसे ही होती है. And women like these pictures. मुझे लगा मिलके conversation करके सब पुराने तरीके हैं. Listen, I get it. Online dating is not easy. और कभी-कभी ऐसे लगता है कि जो हमें पसंद है वो शायद आज चलता भी है या नहीं। But just be yourself. This is just not cool, man. I get it. Sorry once again. It's okay. याद आओ? फैटी एक आर्टिस्ट है, संग्राम सीकार। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। रिक्लूस है, उसका जरा पता लगाओ। अब एंजो एग्जीबिशन की हाईलाइट वही होगा। अब चाहे इस जमाने में वो चले या ना चले, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम पिकिंग डिक पिक्स फॉर दिस एग्जीबिशन। अब मैं वो करूंगी जो अंदर से आएगा।